Good morning class. It's our class 8 science video part 13. Students, in our previous video we are discussing about crop production and management, and we cover many steps of crop production in our last video, and we revised too. So first we revise some basic steps how we produce a crop, then we will move on our next topic. Okay students, these are some basic steps or basic preparation to produce a crop. In which first basic practice, in which we cover first soil selection, how we select our soil and what are the needs for selection of soil. It has to be fully nourished, having a good fertile soil, having a humus and proper water holding capacity. We already discussed them. Next we saw how to prepare the soil. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कि किस तरीके से हम सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय प्लॉगिंग, होल, इन विच वी सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की नीड्स होती है, जिसके थ्रू हम सॉइल को लेवल द सॉइल फॉर कितने लेवल करते हैं, फॉर सोइंग द सीड. Before sowing the seed, we have to select them. So the third step in basic practice is selecting of seed. So our third step first is selecting the seed. So selecting the seed should be very important, because good yielding crop, जो गुड यील्डिंग क्रॉप्स होती हैं, जिनका बेटर प्रोडक्शन होता है, वो किसके थ्रू होता है. अगर हमारा जो सीड है, इफ़ इट इज़ गुड एंड हाई यील्डेड विदाउट एनी डिजीज, सो वी हैव टू सेलेक्ट अ गुड सीड. देन द नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग सीड. इट कैन बी डन मैनुअली और बाय सीड ड्रिल. मैं अभी आपको सिर्फ ओनली आई एम डिस्क्राइबिंग यू शॉर्ट टर्म, because we already revised in our previous video. I am just memorizing you. Our next step is replenishing or enriching of soil. Means how we nourish the soil by manually, we can call it naturally, or by artificial need, इन विच वी सॉ कि फर्स्ट नेचुरली में कि सॉइल अपने आप को कैसे नॉरिश करती है बाय इटसेल्फ, बाय क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड फीड फैलो. बट आर्टिफिशियली इट कैन डन बाय फार्मर, लाइक बाय एडिंग मैन्योर एंड बाय एडिंग फर्टिलाइजर. मैन्योर it enriches the humus in the soil, but fertilizer are a specific nutrient and they treat some specific problem. Okay, after enriching the soil, हमने पहले सॉइल सेलेक्ट की, फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, जिस तरीके से हमें सीड को ग्रो करवाना है उस टाइप. नेक्स्ट फिर वी सेलेक्ट द सीड, देन वी सो इट, आफ्टर इट वी एनरिच द सॉइल. Next step is irrigation. Irrigation means watering of crop. Every plant, everything needs water for survival. So irrigation must be in optimum amount, not more than, not less. Optimum water. Okay. And we discuss some different types of method also, like drip irrigation, sprinkle system. Drip and sprinkle system are the modern technique, while mode, pulley system, these are the traditional methods used in the traditional years. Next is weeding. First, weed is unwanted plant or unwanted growth of plant, which we have to remove because they take nutrient from the crop.
we have to remove them. Then the process of removing that weed, it's known as weeding. So it's our sixth step. And last, the protecting the crop from pests. Soil select करने से लेके to protect the crop, we cover these all topics. And how we protect the crop from pests? There are many methods like pesticides. It can be protected with chemicals. First, pesticides for pests like small insects. Next, insecticides you can easily name with insect means like caterpillar, ladybug. Next, rodenticides. Rodenticides, those have a canine teeth like rat, squirrel, which eat grain mainly. Next, fungicides. Fungicides mean to protect the crop from any disease. So we use fungicides. So it's a general steps which we cover in our last video. Students, there are some diagrams of basic practice of crop production. We will take a look on it first. ये जो शो हो रहा है इसका सॉइल, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा सॉइल सिलेक्शन. सो एज्यूम दैट ये जो सॉइल है इट वेरी रफ हैविंग अ स्टोन्स वीड्स बट इट्स अ वेरी लेवल सॉइल. सो वी विल सेलेक्ट दिस सॉइल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. And how we label the soil? So our next step is preparation. We can done it with plow for losing the soil and increasing the water and air holding capacity. So preparation is done with agriculture implement, which is agriculture tools. Next step is selection of seed. Suppose it is a seed which having some disease or नॉट अ यूनिफॉर्म नेचर, मतलब ये जो सीड है ये खराब है. देन वी विल सिलेक्ट अ बेटर सीड फॉर गुड यील्डिंग क्रॉप. गुड यील्डिंग क्रॉप मीन्स विच गिव अ बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप हैविंग अ गुड वेराइटी. नेक्स्ट, टू सो द सीड. अब हमें किस तरीके से वी हैव टू सो अ सीड. वी हैव हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है. जैसे ये सर्कल्स हैं, अज्यूम दे आर सीड एंड हैविंग सम डिस्टेंस बिकॉज इनके जो रूट्स हैं दे गॉट स्पेस फॉर ग्रोथ. सो वी हैव टू कीप अ डिस्टेंस इन ऑल सीड्स इन सोइंग अ सीड. नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जो लास्ट वीडियो में कवर करा था एनरिचिंग ऑफ सॉइल, किस तरीके से हम सॉइल को नरिशमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं. सो उसमें नेचुरली मेथड थे और आर्टिफिशियल. नेचुरली में था कि फर्स्ट क्रॉप रोटेशन. सो इट इज़ अ क्रॉप रोटेशन. फर्स्ट वी ग्रो राइस बट आफ्टर 1 year वी विल ग्रो लाइक वीट, दाल, एनी अदर क्रॉप. बिकॉज जो राइस के न्यूट्रिएंट होंगे दे गेट कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल में एब्जॉर्ब होंगे. सो सॉइल गेट नॉरिश फ्रॉम देम एंड आफ्टर 1 year it is fully nourished to grow some such other crop. Next, mixed cropping. Suppose in this first row is of cabbage and second row is spinach. So it's a mixed cropping. In one field different types of crops are grown and different types of crop having some different nutrients which get absorbed by soil too. Second is feed fallow. Suppose it is a crop of rice. We don't cut them from root. We just cut from the root, and roots are present in the soil which decompose or degraded by the bacteria which present in the soil. So they help in nourishing the soil too. Next, we saw irrigation. Irrigation, first is drip irrigation, second is sprinkle system. Drip irrigation, like suppose it is a water tank and the pipes are laid down on the ground and they sprinkle water.
and it is a sprinkle system in which the large pipes are held perpendicularly. These are the large pipes and they sprinkle water like a shower, but in drip irrigation they are laid down on the land. This is the difference. So it is our journal topic which we discussed in our last video. I revised you. In next video we will cover our new topic.